Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here I am back again with another video where I will be covering every important question which you need to prepare for your cabin crew interview if you are going for this month. So keep in mind that these questions are very important and you should prepare try good for your interview as you can, because candidates do feel that कि अरे यार हम तो कर ही लेंगे, हम तो बोल ही लेंगे, but the moment you enter the venue you just black out or you freak out. So I would suggest you to prepare as much as you can so that you do not fumble and you give your answers to the point, short and crisp, so that, because what I believe only it takes 17 seconds for you to make your long lasting impression, and if you can grab those 17 seconds you can one step closer to your wins. What we are waiting for? Let's get started. The very first question is, what makes Indigo unique than another airlines? Why only Indigo? See, both of these are different questions, and I would prefer saying that कि why only Indigo में आप अपना question अपना आंसर रखो कि why you want to be a part of Indigo. Whereas Indigo unique than other airlines में what you can say, you can talk about their ATR fleet, their women empowerment module that they generally work on, and lot of things which is there on Wikipedia, even on their site जो आप बोल सकते हो. Why customer satisfaction is important? I believe customer satisfaction is the heart of the aviation industry. Because customer से ही airlines हैं, even aviation industry है. So try to make your answer something regarding this. Another one is, which is very much important, costs and consequences of it. Every another candidate was asked this particular thing, and guess what? They legit fumbled it. Because हम सोचते हैं कि यार मीडिया है, मतलब easy topics है, हम बोल लेंगे, but ऐसा नहीं हो पाता है. Another one is, whom you love the most in your family and why? बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बिकॉज एट दैट टाइम बस आपके दिमाग में ये चल रहा होता है, अरे यार मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, बिकॉज इफ़ आई विल से मम्मा तो दे माइट जज भी कि पापा के साथ बॉन्ड नहीं है. सो थिंक ट्राई यू स्पीक. इफ टू पैसेंजर्स आर क्वारलिंग फॉर अ सिंगल सीट, हाउ वुड यू डील? अनदर वन इज, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली. जितना इंपॉर्टेंट है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि यू प्रिपेयर समथिंग अबाउट ऑन योर फैमिली एज वेल, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो हाउ वेल डू यू नो योर पीपल अराउंड. क्योंकि मेरे बैच में जितने भी कैंडिडेट्स थे, दे वर आस्क्ड इंक्लूडिंग मी, टेल मी योर रूटीन, कि वो क्या करते हैं एंटायर डे, व्हाट इज देयर गो टू रूटीन एंड एवरीथिंग, एंड समथिंग लेजेंडरी. सो प्रिपेयर ऑन दैट. वेयर आर यू? मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे थे जो कि जिनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड दे जस्ट आंसर्ड इन अ वर्ड, आगरा. आई एम फ्रॉम मथुरा, विच इज ऑल्सो नोन एज कृष्ण जन्मभूमि एंड फेमस फॉर इट्स प्याज. So that is something unique, and always keep in mind to keep that smile on your face. Because I was someone who was changing from 9 to 5 days job to aviation. So ये question तो बनता ही बनता है. Another one is, what are your strengths and hobbies? Who is your ideal? Qualities you want to gain from them. चाहते हो. मेरे केस में my ideal is and always have been my Sudhir Kumar. If you know what I am talking about. In my Sudhir Kumar, who is my father. Okay, talk about your previous job and why did you leave. प्लीज़ 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 कुछ टॉक्सिक मत बोलना कि मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक था, मुझे पे अच्छा नहीं मिलता था या समथिंग लाइक दैट. ट्राई कि आप जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी कुछ पॉजिटिव करके बोलो, जैसे कि आई वॉज लुकिंग फॉर ग्रोथ, लाइक दैट यू कैन मेक. शुड वुमेन गेट द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव? भाई वी आर फ्लाइंग एयरप्लेन्स, सो ड्राइव करना तो छोटी सी चीज़ है. आई बिलीव. डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड? इफ है तो क्यों है? कौन सी क्वालिटीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है उनकी? वन थिंग योर रोल मॉडल्स टोल्ड यू एंड यू फॉलो. द क्वेश्चन इज, हाउ AI इज यूजफुल इन एविएशन. ये क्वेश्चन सबको पूछा गया था, ऑलमोस्ट सबको, एंड आई गेस यही वाला क्वेश्चन था जो कि ब्रेक थ्रू था कि ओके वेदर वी वांट टू सेलेक्ट और वी डोंट वांट. Third thing जो कि सबसे पूछी गई थी was, tell me about your mom's schedule, tell me about your father's schedule, how was your last weekend and how did you spend it. ये वाला था. And if you're traveling from somewhere, जैसे कि there were candidates जो कि I guess गुड़गांव से आए थे या गाजियाबाद वगैरह से आए थे, तो दे वर आस्क्ड एंटायर थिंग कि हाउ डिड यू ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर. मतलब दे जस्ट वांट टू सी कि हाउ अलर्ट यू आर, बिकॉज कैबिन क्रू इज ऑल अबाउट बीइंग अलर्ट एंड बी अटेंटिव.
Like you should have attention to the details. Another question जो बहुत sudden था वो पूछा गया था, what is your favorite color and why? I mean, मैं नहीं सोच सकती थी कि मुझे ऐसा कुछ पूछा जाएगा, but yeah, I did tell them that my favorite color is red, since I'm a person who believes in giving love and receiving love. So, and red is something which defines love. So that was my answer. So that's all from my end. And if you want to know how did I answer, one important tip: try to keep your answer short and crisp. क्योंकि वहाँ पे 400 से 500 लोग आए हुए हैं, एंड डू यू एक्चुअली थिंक कि आपके लॉन्ग आंसर्स को दे आर वेटिंग टू लिसन? नो, just there to recruit you on the basis of your communication. They want to check whether you can be comfortable in talking to the people or not. So that is what their deciding factor is. These were the questions which were asked to me and which are equally important for your next interview somewhere around. Then good luck. Hopefully you will get your wins and you fly high. Answers what I have given, so I'll try to mention them in the comment section. Thank you so much for watching, and if you haven't subscribed yet, please do it, because I can feel the changes in me, and I can feel, yes, I have been so better from last few days, and also got something done to this one. Would be sharing in another video कि मैंने क्या कराया, कैसे कराया, everything. Till then, stay safe, stay hydrated, stay happy, and keep glowing. Bye bye. See you soon.